Next question is the hydrochloric acid is produced by G cells, D cells, oxyntic cells and cheap cells. Correct answer is oxyntic cell. Okay, we used to call oxyntic cell is parietal cells. Parietal cell. Parietal cells secrete SCL and intrinsic factor of Custer. Okay, this is the correct answer. While the G cells secrete gastrin. Okay, D cells secrete somatostatin. Okay, while cheap cells secrete what? Pepsinogen. That's why for cheap cells we also used to call peptic cells. So यहाँ पे आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, G cells gastrin. Okay, पेप्सिनोजन पेप्टिक. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट gastric emptying? Increase by secretin, decrease by cholecystokinin, decrease by gastrin, increase by GIP. Okay, gastric inhibitory peptide. So decrease by cholecystokinin is the correct answer. कैसे, एक टेबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिक्रीज एम्प्टिंग, स्टमक एम्प्टिंग. ओके, और इधर लिखता हूँ मैं इंक्रीज एम्प्टिंग. ओके, चलो कौन कौन डिक्रीज करता है? अगर कोलेसिस्टोकाइनिन डिक्रीज होगा तो जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो क्या होगी? कम होगी, वो उसको अफेक्ट करेगा. ओके, सो डिक्रीज कोलेसिस्टोकाइनिन. ओके, सेकेंड वन सिक्रेटिन, बट यहाँ पे सिक्रेटिन लिखा है इंक्रीज, बट अगर यहाँ पे सिक्रेटिन डिक्रीज होता तो अपना आंसर ये भी हो सकता था. सो सिक्रेटिन डिक्रीज. ओके, नेक्स्ट वन है GIP इंक्रीज. ओके, सो GIP डिक्रीज. ओके, चलो और एक सोमेटोस्टेटिन भी लिख लो. सोमेटो डिक्रीज इन सोमेटोस्टेटिन. ओके, दैट विल आल्सो अफेक्ट द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. चलो इंक्रीज कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट rich foods that leaves the stomach in few hours, like 1 to 2 hours. We already discussed in our video lectures. Okay, second one is protein rich food that also leave the stomach very soon in just 3 to 4 hours. Okay, while our next question is gastric emptying maximum affect by lipid, amino acid, carbohydrate, fiber. So answer is the lipid. How lipid? Because lipid, fat, oil, okay, these are leave the stomach or gastrointestinal tract after 5 to 6 hours. So these are taking the maximum time. Okay, here you can write the presence of fat in small intestine is the most potent inhibitor of gastric emptying. Okay, gastric emptying. When the fat has been absorbed, the inhibitory stimulus is removed and productive gastric motility will start. Okay, so that this is our concept about the 3 questions